I am Anukriti Sengupta and I am a Hindustani classical vocalist. अच्छा. I have been training in the style of Kirana Gharana Okay. and I have been learning classical music since the past roughly 20 years now. Oh, And I am a music educator. I have been teaching since 5 years. oh, great. So thanks a lot, ma'am, for sharing information about you. So the first thing which I want to ask you, ma'am, do you think that when we teach music to kids from the young age, like is it beneficial for them or not? Absolutely. It is very important to, have music education in the early years for children because, music is one of the exercises which engages the almost the entire brain, Hmm. right? It helps in increasing attention and focus, helps with language, understanding of language, social, economical situations. Also, their cognitive abilities, emotional growth, all of this, music helps with everything, and it's also a multidisciplinary subject. Yeah. So music can also be very beneficial in teaching of other, academic subjects like math, science, Mhm. language, all of social studies, everything. You can include music in all the subjects. So Correct. I do feel music is very important for the early years in education, definitely. Okay. So may I know, ma'am, like how you started your musical journey? Like, is it was when you were in school life or how? So that's an interesting question. Yes, I started my musical journey when I was 7 years old. Okay. And so the major factor was my music teacher in school. She recognized my talent. Actually, nobody in our family knew that I could sing. Okay. But, my school teacher, she told my parents when I was in nursery that, she has a good voice and maybe you should get her trained professionally. Okay. And at that time, we were not able to find any gurus for me in classical music because everyone thought I was too young to start off. Then, after a couple of years, we requested my school music teacher only if I can start my journey with her. And since then, now it's been 20 years, I have been training under her tutelage. Great. So your musical journey started from vocals, ma'am. Am I right? Yes, yes. Okay. So in today's life, whenever like parent want to enroll their kid in music, so they have three choices or four choices. Like primary, they have vocals, instrument, vocal plus instrument both. Or if the Hmm. kid is like not too young, they can start learning production also. So what do you think is good way to start when the kids are new? I think starting with vocal and instrumental is a very good, like both together, maybe if possible, or depending on the student's interest, on the child's interests also. Because, sometimes, especially when it comes to Indian music, a lot of teachers are still teaching in a very traditional setup, which can be a little difficult for the smaller kids to, understand and go through. But in today's day and age, like I have been teaching both offline and online, our methodologies have changed over time. So Mm-hmm. the way I learned it was with an instrument. So even when I was learning vocal, I was learning to play the harmonium along with it, which also helped me to learn basic level piano and everything. Mm-hmm. Learned a little bit of tabla also, some drums also, and that also improved my overall understanding of music in general. So if it could be like a holistic kind of a training, if it can be vocals with maybe let's say a melody instrument, like if it's Indian vocals, you can go ahead with a harmonium class. Or if somebody is more into Western vocals, maybe you could learn guitar along with it or piano along with it. It definitely does help a lot. So both together is a good choice. Or of course, it depends on the interests also. Like when I was young, I was learning both music and dance. So that also helped me, music in terms of dance learning also. It was really great because I could then relate both the things to each other, whatever I was studying. Yeah. So, yeah, so it depends from student to student because every child has their own aptitude. Some people pick up singing more easily, some people pick up instruments more easily, some are good with both together also. So, it takes time to kind of understand what direction to take. So maybe start off with vocals along with some simple melody instrument, and then over time we can see where the interest is going, and then you can maybe specialize in one of those. So as you started your musical journey from vocals until now you are into
vocals, I can say. Now, Yeah. suppose today, like you are a classical Hindustani classical vocalist. अगर आपकी लाइफ में म्यूजिक नहीं होता तो आज आप क्या होते? अगर मेरी लाइफ में म्यूजिक नहीं होता तो मैंने ग्रेजुएशन साइंस में किया था, तो शायद आज मैं पीएचडी करके साइंस में स्कॉलर होती, शायद मे बी किसी रिसर्च में होती, मैं लैब में रिसर्च कर रही होती. सो that was one thing, but actually क्या हुआ ना, when I was studying in college, so I was in Delhi University and we were very actively a part of our music societies in each college. And वहाँ पे जाकर के I realized that my passion was more towards music as compared to science, and that is when I took the decision of taking it up professionally. So for masters, then I did not go ahead with science. I told my parents that I'm going to study music further and I'm going to take it up professionally. Okay. So हाँ, शायद अगर मैं music में नहीं होती तो I would have been into science. Yeah. Great. So when you started learning vocals from when you were 7, so from that time also you started learning how to read that notation, or you started learning notation later on now? I started learning right from the beginning. Basic. Hindustani music का notation system is different from how we have it in Western, of course. Western में staff notation system is very different. So notation system शुरुआत से ही सीखा because हारमोनियम भी साथ में सीख रहे थे. So for that it becomes easier. आप notation अगर read कर रहे हैं उसके साथ सीखना singing. And I feel later on to create notations on your own also. अगर शुरू से आप notation पढ़ना नहीं सीखेंगे तो आप खुद से notation बनाना भी नहीं सीख सकते हैं बाद में. So that helps with your ear training also, कि धीरे धीरे आप notations के साथ साथ अगर आप सुन रहे हैं notes को तो ear training भी strong हो जाती है आपके, सुर को पहचानना easier हो जाता है. So yeah, started right from the beginning with the notation reading also. So now suppose there is a situation in front of you. We have two kids who are learning music. Suppose they are learning vocals only, Hindustani vocals. But one is getting the opportunity to learn notation and then singing and all. Other one is not getting that opportunity. So what do you think, whose musical development will be better? The one who is getting that or the one who is not getting that? I feel the one who is getting the notation का knowledge would be better, because as I said कि notation समझने से आप बाद में खुद से गानों की notations को समझना सीखते हैं. Otherwise क्या है, धुन कोई भी उठा सकता है, right? कई लोग ऐसे होते हैं untrained singers जो हम कहते हैं कि आप सुन करके आप replicate कर दे रहे ट्यून, but the technicality behind it is what they don't understand. उसकी शुरुआत हम अगर बहुत बेसिक शुरुआत हम देखें तो वो नोटेशन सही होगी, जहाँ पे इफ द स्टूडेंट इज लर्निंग हाउ टू रीड द नोटेशन एंड प्ले और सिंग इट, धीरे धीरे अगर हम उनसे एक्सपेक्ट करने लगे कि अच्छा आप अब गाना सुन के क्या इसका नोटेशन निकाल सकते हैं, सो इफ दे हैव टू लर्न अ सॉन्ग फॉर एग्जांपल एंड उसका उनको नहीं पता कि उनको किस पिच पे किस स्केल पे गाना चाहिए, इफ दे हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ नोटेशंस, वो समझ सकते हैं सुन करके कि मैं उसको दूसरे स्केल पर भी कैसे उठा सकता हूँ. या आगे जाकर के अगर म्यूजिक प्रोडक्शन में भी दे वांट टू गो, दे वांट टू बिकम प्रोड्यूसर्स, दे वांट टू बिकम कंपोजर्स, दे वांट टू क्रिएट सॉन्ग्स ऑफ देयर ओन, देयर आल्सो द नोटेशन, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप एक ट्यून क्रिएट करेंगे, एक मेलोडी क्रिएट करेंगे, सो उसके लिए एक फ्रेमवर्क चाहिए. सो आई वुड से दैट a child who is getting the knowledge of notations would be better off in terms of technicality. Okay. So you took harmonium because as far as I know, in Hindustani classical, harmonium is the primary instrument. So suppose the kids who are into learning instrument, but they are not learning vocal. So what do you think, which instrument is good to start with? Like nowadays in school, we have keyboard, guitar, drums, and nowadays ukulele is also very popular instrument for kids. Yeah. So what do you think, which instrument is good to start when the kids are young and they are starting as a fresher? As a fresher, I think any key instrument is good because there you can actually visualize all the notes in front of you. आपको सारा हर एक की दिख रहा है तो easier हो जाता है guide करना, melody समझ में आता है. And in terms of rhythm, if they are more into percussions, then maybe something like Congo or some bongos, जो hand drums है जो easier patterns में play किए जा सकते हैं, something like that is a good starter point. Even I've seen when I used to teach at a school also earlier, so हम लोग वहाँ पे xylophones भी सिखाते थे, तो उसमें भी we saw that the understanding of melody became very strong because they could see all the keys and the notes in front of them.
Correct. Then धीरे धीरे we shifted them into learning ukulele, or as they went into middle school, learning more complex instruments like maybe guitar, or even somebody who's training in even more complex instruments like sitar or violin or stuff. So maybe starting off with a key instrument, like a keyboard, harmonium, piano, xylophone also for that matter, and for rhythm maybe some simple hand drums or something like that usually is a good starter. Okay, so now I know that you are in offline as well as an online mode of teaching also. So Yeah. what do you think, which is, I can say, better or convenient way to learn music for the kids? Is it offline, online, or group, or one-on-one? What are your suggestions on this? So in terms of Hindustani vocals, अगर मैं बात करूँ, I would say one-on-one class अगर मिल सके तो there's nothing better than that. Because अगर हम ट्रेडिशनल तरीके में भी देखें, we used to have गुरु शिष्य परंपरा, जहाँ पे आप अपने गुरु के साथ में रह करके उनके सामने आप सीखते थे. जी. Group sessions में what I feel is that individual attention from that person goes away. So working on the smaller, intricacies becomes a little difficult. Although there are a lot of people who do prefer group sessions and have done very well with it also. But अगर मैं अपनी preference बताऊँ, I would suggest to go for a one-on-one session जहाँ पे complete attention आपके ऊपर हो as a student, आपके गुरु का. And online and offline में अगर मुझे judge करना पड़े, I think nowadays we are very well adapted with online also. And online helps in terms of convenience because these days, both the parents are mostly working, nuclear families hai. It is difficult for them to, travel with their child to take them for classes. Yes. So in that sense, online is very good. Like if you get a good teacher who knows how to teach you through the online platform, and if the platform is good enough to give you all the facilities which make it easier for you to learn, then online is also great. But if you can find somebody offline, also perfect. It completely depends on the relationship that you can build with your teacher, the kind of teacher that you have. So like if I see myself, my teaching method online will be very different from how I would teach somebody offline. But and online के साथ ये भी है कि internationally भी हमारा थोड़ा approach बढ़ गया. So I have a lot of students who are in US. So it has become so much easier for them to learn Indian music from people who are in India. Yes. So in terms of that, I think online and offline में you can check your convenience. कि कई लोगों को ऑनलाइन बहुत कन्वीनियंट लगता है कि एटलीस्ट द ट्रैवलिंग टाइम बच जाता है उनका, घर पे बैठ करके कन्वीनियंस से आप सीख सकते हैं. एंड देयर आर अ लॉट ऑफ गुड प्लेटफॉर्म्स हु आर ऑफरिंग गुड ट्रेन्ड टीचर्स एंड बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज कि आपको वो ऑनलाइन ही इंस्ट्रूमेंट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, या रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइडेड है, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड टू यू इन वन प्लेस. तो यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी in buying a lot of instruments and all right in the beginning stages. क्योंकि कई बार क्या होता है, आप क्लासेस में भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं टीचर के लिए, उसके बाद आपको इंस्ट्रूमेंट्स भी खरीदने हैं बच्चे के लिए. I think that way if you find a good platform which is providing you with all of these facilities, maybe online is also a great way to learn music these days. Like now that barrier कि online नहीं सीखा जा सकता has practically gone away after COVID. Right, correct. So, ma'am, like nowadays, everybody is dealing with stress, whether they are working professional or they are managing home or they are doing some kind of business, anything. So, what do you think? How they can take help of music in maintaining their stress level? सबसे पहले easiest is of course listening to music, right? Nothing better than that. Music instant stress reliever है. आप like even if मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ या बड़ों की बात करें, किसी की भी बात करें, हम कहते हैं म्यूजिक सुनते हुए आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं या आप कोई भी काम भी कर रहे हैं अपना, आपका अटेंशन लेवल बढ़ जाता है उस टाइम पे, राइट? आपकी मेमोरी बढ़ जाती है, दैट वट एवर यू आर डूइंग यू वुड रिमेंबर दैट बिकॉज ऑफ द म्यूजिक दैट यू वर लिसनिंग टू एट दैट पॉइंट, राइट? सो फर्स्ट इज ऑफ कोर्स दैट if interested, if you can take up some basic classes also, like for adults, I teach a lot of adult students also who are taking it up professionally just as a hobby. But I know that 1 hour once a week that they spend with me in the class, they relax during that time कि वो practice कर रहे हैं, गा रहे हैं, उसी practice को फिर वो जब घर पे भी करते हैं, it's more or less like meditation for them. तो अगर वो 10-15 मिनट 30 मिनट भी अगर प्रैक्टिस करते हैं, जो भी एक्सरसाइजेस हमने किया, सिंपल एक्सरसाइजेस वो काफी मेडिटेटिव इफेक्ट रहता है उन लोगों पर.
So that way it helps a lot with relieving your stress. So after a long day at work, आप शाम को आइए, आप just गाना प्ले करके आप कुकिंग कर रहे हैं, या फिर आप जब ड्राइव करते हुए भी हम मोस्टली गाने इसलिए सुनते हैं, इट काइंड ऑफ हेल्प्स यू टू रिलैक्स. फिर व्हेन यू आर लर्निंग ऑल्सो क्या होता है कि आप और भी अपने आसपास की चीजें उस टाइम पे भूल करके आपका फोकस उस टाइम पे उस म्यूजिक पर रहता है. So that, as I said, all my adult students are mostly learning for this reason only, that it really helps us to relax after a long day of work. So घर पे भी बैठ के वो 10 मिनट भी चाहे प्रैक्टिस करते हैं, then they send me the recordings and then they tell me that it feels so good after those 10 minutes of practice. उसके बाद हम ना पूरे दिन की थकान भूल जाते हैं. So these are two ways. One, of course, listening to music तो सबके लिए वो universal हो जाता है. If you can pick up learning vocals or instruments or anything, अगर आप अपना हफ्ते का आधा घंटा भी उसमें दे सकते हैं, that also helps a lot. जी. Okay. So as we both are into this music, so हमें भी कभी ना कभी stress feel होता ही है, stressful situations आ जाती हैं, because it's life and life is unpredictable. So what do you do when you are in stress, or what kind of music you listen when you feel that you are in a stressful position now? Mostly अगर मैं बहुत stressed feel कर रही होती हूँ, I will play some very mellow instrumental music. Nothing very fast paced. कुछ थोड़ा slow हो, melodic हो, softer music, maybe something like a flute, listening to flute और सितार का piece आप अच्छा सा कोई play करें. Also in this Hindustani music में तो हम कहते ही हैं कि ragas जो है, different ragas have different effect on our mental health. So if you know what kind of rag you should listen to at particular time, we have an entire day cycle of ragas also कि particular time पे particular rag को गाया बजाया जाता है. उस हिसाब से आप उसको सुनेंगे, it really helps with relaxing. So I would usually go with listening to some instrumental pieces, be it Indian, be it Western. I can कुछ भी एक soft सा instrumental piece आप background में थोड़ी देर play कर दीजिए, half an hour वही सुना, it brings all of that stress down. So now you were telling that we have prayers, I can say. You were talking prayers that time. Yeah. So when you are in stress, you listen ragas or instrumental music based on ragas. So is it like that, when you are stressful, when you are in stress in evening, so you are going to listen the rag which is specifically made for that prayer, or you are going to listen anything else? Again, mood पर depend करता है. कई बार जैसे evening ragas usually बहुत Rag Yaman is a beautiful rag, one of my favorites also, and it's a very beautiful evening rag. So हाँ, शाम के time पे I would maybe listen to that. अभी जैसे monsoon season चल रहा है तो राग मियाँ मल्हार चला दीजिए. Nothing better than that. It starts feeling like it's raining around you even if it's not. Yes. Right? So of course it does affect, but कभी कभी आपके खुद के mood पे भी आपके choices, कई लोगों के अपने personal choices भी रहते हैं, उसके हिसाब से भी if you listen, कुछ लोगों को थोड़े कोमल स्वरों वाले रागों को सुन के थोड़ा relaxing लगता है, कई लोगों को थोड़े ज्यादा अगर शुद्ध स्वर यूज हो रहे हैं वो ज्यादा because it sounds a bit more happier, something like that relaxes you more. And sometimes it depends from your day to day mood also, कि आज थोड़ा शायद भैरवी सुनने का mood हो गया आज कभी ऐसे. So it depends. Time of the day also does affect, क्योंकि वो राग का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा उसी टाइम पर आता है ऑफ कोर्स. बट स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो करते हुए भी जो भी आपको पसंद आ रहा है सुनने में, जस्ट पिक दैट अप. डोंट थिंक टू मच अबाउट द शास्त्रस एंड एवरीथिंग. जब आपको सुनना है जो पसंद आ रहा है, इफ यू जस्ट लिसन टू दैट, व्हाटएवर इज हेल्पिंग यू टू रिलैक्स, दैट इज द बेस्ट. So on the same thing, I would like to ask you, ma'am, which is the most closest rag of your heart? बहुत सारे हैं, ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है. You can choose one. I think yeah, like I said, Rag Yaman is one of those ragas. I really love that rag क्योंकि उसका it's so universal in its approach ना, कि आप उसको क्लासिकल में भी जितना ज्यादा बढ़ा करके सुंदर तरीके से दिखा सकते हैं, उतना ही ज्यादा उसको लाइट म्यूजिक में भी यूज कर सकते हैं. बॉलीवुड में मतलब इतने सारे सॉन्ग्स है राग यमन पे बेस्ड कि आपको याद नहीं रह सकते, इतनी लंबी लिस्ट एंड ऑल वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग्स. सो या दैट इज वन ऑफ द रागास आई रियली लव लिसनिंग टू. Yeah, singing also, in terms of performing also, I always love singing Rag Yaman. There is Rag Maru Bihag, which I really like to sing. फिर
भैरवी ऑफ कोर्स व्हेन इट्स लाइक थोड़ा एक डिवोशनल स्पिरिचुअल एस्पेक्ट आ जाता है उसमें. सो जब कभी थोड़ा ऐसा मूड हो, थोड़ा भक्ति वाला मूड होता है, तब Yeah. भैरवी इज अनदर वेरी ब्यूटीफुल राग. Yes. सो मधुवंती है, वो भी बहुत सुंदर राग है. सो ऐसे मतलब आई कैन कीप ऑन तो वो इंक्रीजिंग फिर द बहुत लिस्ट. सारा लिस्ट आ जाएगा ऐसे तो. हाँ, बट आई थिंक अगर टॉप मोस्ट में हम रखें तो सबसे ऊपर मेरे लिए राग यमन होगा, आई गेस. Okay. So, ma'am, do you like have you studied about staff notation also in Western music? एज सच बहुत डिटेल में नहीं सीखा है, हाँ. बट बेसिक थोड़ा सा सीखा था. एंड फॉर मी एज अ स्टूडेंट ऑफ हिंदुस्तानी इट वाज वेरी कंफ्यूजिंग आल्सो, बट आई हैव सीन एटलीस्ट बेसिक स्टफ, क्या होता है ट्रेबल क्लेफ, बेस क्लेफ, हाउ टू Okay. मेक द लाइंस एंड द गैप्स में So, क्या क्या नोट्स like रहते हैं, a उतना very आइडिया है. general question I'm going to ask you in Indian as well as Western. Like, what similarities actually you see when you have Indian classical and Western classical music? आई थिंक बहुत डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ टेक्निक्स, राइट. हमारा वॉइस प्रोजेक्शन ही कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाता है, नोटेशन सिस्टम कम्प्लीटली डिफरेंट है. बट अगर हम बेस देखें वो बिल्कुल सेम है, कि वही 12 स्वरों को लेकर के, मतलब 7 स्वर का सप्तक, और उसमें हमारे जो कोमल और तीव्र नोट्स इन द सेम शार्प एंड फ्लैट्स का कॉन्सेप्ट जो हम वेस्टर्न म्यूजिक में देखते हैं. बेस हमारा उन्हीं नोट्स में से है, सिर्फ उनको गाने बजाने का तरीका चेंज हो जाता है, इज व्हाट आई फील. एंड दैट इज व्हाट आई टेल ऑल माय स्टूडेंट्स आल्सो, कि अगर आप सीखना चाहते हैं, आप कोई भी फॉर्म ऑफ क्लासिकल अगर सीख लेंगे, एटलीस्ट बेसिक आपका जब स्ट्रांग हो जाता है, उसके बाद टेक्निक्स जब आप सीखने लगते हो, उसमें आप मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स के म्यूजिक भी सीख सकते हैं, जिससे आप अलग अलग तरीके के टेक्निक सीख जाएंगे. जैसे क्लासिकल, हिंदुस्तानी क्लासिकल में हम फॉल्सेटो नहीं यूज करते हैं, हमको अपनी एक्चुअल वॉइस में गाना होता है. बट आई फील वेरी स्टक एट अ लॉट ऑफ टाइम्स कि मैं वो चीज नहीं कर पाती हूँ. आई वांट टू लर्न दैट आल्सो, कि वेस्टर्न में आप वो चीज सीखते हैं कि कैसे उसको यूज किया जाता है प्रॉपर तरीके से. सो सिमिलैरिटीज आर इन टर्म्स ऑफ द वेरी बेसिक्स, कि नोट्स क्या है, बीट्स क्या है, बेसिक ये चीज बहुत सिमिलर है. स्केल्स हमारे जो राग होते हैं एंड स्केल्स इन वेस्टर्न म्यूजिक आर सिमिलर. आई वुडंट से द सेम थिंग, बिकॉज रागों को तो हम बिल्कुल एक इंसान की तरह ट्रीट कर सकते हैं हर एक राग को, बट बेसिक कॉन्सेप्ट इज द सेम. बट वही ट्रीटमेंट अलग है, बेसिक्स सेम है बट ट्रीटमेंट अलग हो जाता है उनमें. Okay, so now if you are getting chance to learn one more instrument, so which instrument you will be picking now? अभी तो है, आई वॉन्ट टू लर्न गिटार. आई हैव नेवर लर्न हाउ टू प्ले द गिटार, सो दैट इज ऑन माई लिस्ट ऑलरेडी. और कुछ अगर सीखना हो, I might want to pick up piano more professionally, because I am an amateur. I learned on my own. I did not get any professional training in that. So if I get a chance, I would like to take that up professionally as well. Okay. So what suggestions, ma'am, you want to give to the kids who are in musical journey? Only suggestion is enjoy the journey as much as you can. आई नो डिसिप्लिन वाला जब पॉइंट आता है, इट बिकम्स अ बिट बोरिंग, थोड़ा रेपिटेटिव लगने लगता है हमको, कि हमें सेम चीज क्यों बार बार प्रैक्टिस करना है, या क्यों प्रैक्टिस करना है ऑल टुगेदर. बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ किड्स हु सिंग रियली वेल ऑलरेडी, नेचुरली दे हैव अ गुड सेंस, and they don't want to practice, and I have been one of those kids also. मेरी गुरु माँ का मेरे से एक ही कंप्लेंट रहता था कि मैं प्रैक्टिस नहीं करती थी ज्यादा. बट इन चीजों का वैल्यू धीरे धीरे समझ आता है बाद में, कि क्यों वो रिपीटेडली करना भी जरूरी है. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज एंजॉय द जर्नी. जो चीज आप एंजॉय कर रहे हो आप वैसे करो. डू नॉट लुक एट एनी वन एल्सेस जर्नी. आप खुद को कंपेयर मत करिए किसी और से, कि कोई और कहता है मैं 4 घंटे 5 घंटे रियाज करता हूँ, एंड आप शायद सिर्फ आधा घंटा दिन में रियाज करते, तो आप ये मत सोचिए कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, राइट. Everyone has their own way, own pace of learning. आपका अपना vocal stamina है, आपका अपना range है. Do not compare yourself with anyone else. Try to find your own niche. Everyone does not have to be everything. Yes, correct. So कुछ लोग होंगे जो versatile है बहुत ज्यादा, हर टाइप के गाने गा सकते हैं, बहुत अच्छा, बहुत ऊंचा रेंज हो सकता है उन लोगों का. कुछ लोगों का नहीं भी होता है, but there's nothing wrong with that. If you find what is good for you, just work on that and enjoy it as much as you can. You need to love what you are doing. Yeah. And the same question, like what suggestions you want to give to those working professionals who want to involve themselves whether in learning instrument or vocals, but they are not getting time because of their hectic schedule?
आई थिंक हेक्टिक शेड्यूल में से ना हम अगर हफ्ते का आधा घंटा भी निकाल सकते हैं ना, कि आप कोई एक सिंपल सा क्लास ज्वाइन कर लीजिए, चाहे ऑनलाइन कर लीजिए, बिकॉज ऑनलाइन इज वेरी वेरी कन्वीनियंट नाउ, राइट? आप अपने हिसाब से शेड्यूल कर सकते हैं, जिस दिन अवेलेबल नहीं है आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा. सो इफ यू आर रियली इन टू म्यूजिक एंड यू वॉन्ट टू पिक इट अप, try to find that 30 minutes in a day if you can, not even 1 hour. हफ्ते में एक क्लास भी चाहे आप कर लीजिए, आप दिन में उसको 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस करेंगे, बाकी के दिनों में whenever, don't have to sit properly also. आप ड्राइव करते हुए गाइए, आप शावर लेते हुए गाइए, आप खाना पकाते हुए गाइए, बट just try to pick it up. You yourself will feel much better, much relaxed after your stressful days. And एक sense of fulfillment भी मिलता है, because I myself have a lot of students, like I have 50-60 year old people who are learning now, 60 के ऊपर भी है कई लोग. And उनका यही एक रहता है कंप्लेन कि हम बचपन में ना सीख नहीं पाए, हमको बहुत शौक था, हम सीखना चाहते थे, हम सीख नहीं पाए. बट नाउ सिंस दे आर लर्निंग एंड उनको ग्रोथ अभी भी इस एज पे भी उन्हें दिखता है कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है. एंड वो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आपको बहुत it makes you happy at the end of the day, and that is very important. I think in today's day and time there are so many things that stress us out. We have so many mental health issues coming up, and with all of this, kai log who are working from home, आप सारा दिन अपने घर पे बंदे होते हैं, all of these have a very negative impact on us, on our health. So if we can take out time for ourselves ना, थोड़ा सा हम सिर्फ दिन में 5-10 मिनट के लिए आप सिर्फ गाएंगे या म्यूजिक को सुनेंगे, it makes you feel happy, like आपका सेरोटोनिन बूस्ट करता है वो चीज. So try, चाहे आप ऑनलाइन क्लासेस से ट्राई करिए, but just go ahead. A lot of people have this inhibition that after a certain age maybe I can't learn, और पता नहीं हम शायद अच्छा गाते नहीं है, हमारी आवाज अच्छी नहीं है, हमारे शायद सुर नहीं है, हम नहीं सीख पाएंगे. None of that matters as long as you are willing to learn again. Just go ahead with it. Yeah. So thanks a lot, ma'am, for accepting invitation and giving your precious time here. Your insights are Thank you valuable for for having me me. as well as the people who are going to watch through our social media platforms. So once again, ma'am, thanks a lot for accepting my invitation and being here, ma'am. Thank you so much. It was great speaking to you and all the people who would be listening as well. Thank you for having me. Okay, thank you, ma'am. Jai Hind, Jai Bharat, ma'am. Thank you. For more details, visit www.88studiolko.com.